Jai Hind everyone. Welcome back to another episode of Voice of Red Hackle, a podcast of the cadets, by the cadets and for the cadets. Today we have Cadet Under Officer Ishupirya from Northeastern Region Directorate. Jai Hind and welcome to VORH. Jai Hind, thank you for having me. Can you please introduce yourself? Yeah, so myself Cadet Under Officer Ishupirya. My native is from Bihar, but I am born and brought up in Mizoram. I am also the first female under officer from my institution, that is National Institute of Technology, Mizoram, and I also belong to the first batch of aero modeling in Mizoram. I also can speak various languages such as Hindi, English, Mizo, Nepali, Bengali, and also Maithili. Thank you. That's very great that you can speak various languages. From where you have learned this? I have learned all these languages from my friends. Okay. Can you please brief about your family background? My father is a government employee. He works in Rajvan, Mizoram, and my mom is a homemaker. As you have said that you are from Bihar, your native is from Bihar, but you're born and brought up in Mizoram. So how would you say that unity has helped you, and how you have indulged in unity? Like, since my native is from Bihar, my roots are from Bihar, but since I'm born and brought up in Mizoram, we also celebrate all the festivals of Bihar in Mizoram. I also celebrate festivals of Mizoram. Like, I do visit church, I do celebrate Christmas with them, I do celebrate my own festivals like Chhath Puja in Bihar. So that's great. Can you please give some glimpses of Mizoram culture and tradition? About Mizoram culture, one festival is there which is celebrated in Mizoram, that is Chapter. It is celebrated in the beginning of spring. They celebrate this with dance and music. और एक चीज़ जो मैं मिज़ोरम के बारे में कहना चाहूँगी वो है कि जब मिज़ो लोग चर्च जाते हैं तो वहाँ पे वुमेन्स जो है वो पुआल लगाती है, और जो मेंस है वो लोग स्मार्ट वे में ड्रेस करते हैं, और उसके अलावा जो किड्स होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ होता है कि हम लोग ट्रेडिशनल पहनते हैं, तो लाइक हम कुर्ती पहनते हैं, सलवार पहनते हैं, बट मिज़ोरम में ऐसा होता है कि वो लोग जो गर्ल्स होती है वो लोग फ्रॉक पहनते हैं, ड्रेस लगाते हैं, और वहीं पे जब वो लोग वुमेनहुड में एंटर करते हैं तो वहाँ से वो लोग पुआल लगाएंगे, एंड फिर सेम एज फॉर बॉयज़. That's very great. What uniqueness of Mizoram is different, and what makes it unique in India? So about Mizoram, what makes it unique is women empowerment. वहाँ पे like बहुत ज़्यादा वुमेन्स को प्रेफरेंस दिया जाता है हर चीज़ में. वुमेन्स हर चीज़ में सबसे आगे रहती है वहाँ पे. वहाँ पे शॉप्स भी वुमेन्स देखती है, घर भी वुमेन्स चलाती है. वहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि वुमेन्स इंडिपेंडेंट है. वो लोग मेंस पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, एंड वुमेन्स को वो फ्रीडम देते हैं वहाँ पे कि दे कैन डू वट एवर दे वांट. एंड ऑल्सो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो हमारे इंडिया की फर्स्ट फीमेल एडीसी है वो वुमेन है, एंड ऑल्सो शी इज़ अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मिज़ोरम. सो दैट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मिज़ोरम. Yes, that's very proud moment for all of us, for India. तो जैसा कि आपने हमें बताया कि आप बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकती हैं, तो क्या आप हमारे कैडेट्स को एक मैसेज देना चाहेंगी अपनी लैंग्वेजेस में? हाँ, सो आई स्टार्ट विद मिज़ो. सो इन मिज़ो आई कैन से दिस दैट लाइक सिंस हम एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप में आए हैं, सो आई से दैट मिशिंग ही थोराल देविन थक थे लाचान एंड किम हे तिथे कन्ने दो लवा. In Nepali, we can say that मान्छेले मिलेर काम गरे भने सबै गर्न सक्छौं. And the same for Bengali will be সবাই যদি একসাথে মিলে মিশে কাম করি তাহলে আমরা বিজয় অর্পণ করতে পারি. That's it. That's very great. We are great to have you. Thank you so much for coming to Voice of Red Hackle. Jai Hind. Jai Hind. Thank you.